Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. All guys, I hope all of you are fine. So in this video I will discuss about the name of the object that you will use in your daily life. So in this video the topic is, can you name these objects in English in vocabulary in your daily life. So आज इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रही हूँ कि ऐसी चीज़ों के नाम जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। बहुत सी वोकैबुलरी की चीज़ें हैं, बहुत सी इंग्लिश की चीज़ें हैं कि जिनका नेम तो हमें पता है लेकिन हम उनके बारे में जानते नहीं हैं और इंग्लिश में कैसे राइट करने हैं। एंड द फर्स्ट थिंग इज़ दैट, सो वेट एंड टेल मी what is this thing, what about this, can you know? So Carousel, carousel. What is this? This is carousel. कैरोसल क्या है कि एक राइडिंग ग्राउंड है, राउंड. And the next thing is And the next thing is, what is this? what is this? This is cloche. क्लॉच क्या है कि बेल शेप्ड वुमेन हैट्स है, ठीक है। इट इज़ अ बेल शेप्ड वुमेन हैट। CLOCH इसकी स्पेलिंग है एंड क्लॉच इज़ अ बेल शेप्ड वुमेन हैट। This is clutch, and the next thing is what is this? Do you know about this? So just watch and wait. What is this? This is mop, MOP, mop. क्लीनिंग मटेरियल है। बेसिकली हमारे होम्स में ये हमारी होम अप्लाइंसेस में आता है, होम में यूज़ होता है। मोप डस्टिंग के लिए यूज़ होता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ दिस। आपको ये पिक्चर में लग रहा होगा कि एक मैन है और ये थीफ लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? कैट बर्गलर। दिस इज़ अ कैट बर्गलर। CAT, cat, BURGLAR, cat burglar. A thief who entered by small building by climbing. मीन क्या हुआ इसका कि एक थीफ है जो कि एक बिल्डिंग के अंदर एंटर हो रहा है क्लाइंबिंग के ज़रिए, तो उसको क्या बोलेंगे? कैट बर्गलर। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़, डू यू नो? CAUL, cauldron.
So these are the name of the object. Hope you will be enjoyed and understand it. So we will meet you in the next video. So Allah Hafiz.